दिखाया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी इस सत्र की विशिष्ट वक्ता डॉक्टर प्रीति बिश्नोई। आप मोती मेमोरियल कॉलेज भावी में प्राचार्य हैं और 8 वर्षों का आपका अध्ययन, अध्यापन एवं प्रशासनिक अनुभव है। आपके कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में पत्र प्रवाचन और पत्र प्रकाशित हुए हैं। ऐसी प्रीति जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। बेकसूर के साथ साथ वो निहत्था भी है, बेकसूर के साथ साथ वो निहत्था भी है। पेड़ को काटना सच में जीव हत्या ही है। आपका स्वागत प्रीति जी। थैंक यू। आप सबका आभार मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं सभी शिक्षक गणों का, आदरणीय सीनियर्स का, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने हेतु आमंत्रित किया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक ऋग्वेद का श्लोक कहना चाहूंगी, जो कि उसके 4थे अध्याय से लिया गया है। उसमें लिखा है, प्रपस्त्यमादितं सिंधु मर्के स्वस्ति मिले सख्याय देवीं पूजे यथा नो अहनि निपात उषा सानकता कर्ता मदब्धे। अर्थात हम प्रकृति के वरदानों को प्राप्त करने की याचना करते हैं। पृथ्वी माता और सागर से आनंद और मित्रता प्राप्त करने के लिए हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। दिन और रात हमारे बिना बाधा के रक्षा करे, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। When we talk about all the facilities from the nature also expects us to regard it the same way. When man's desire for ultimate joy and comfort has led him to exploit nature's free goods to the extent of reduction its natural capacities for self-stabilization. In southern East Asia, the major problems are increasing population density, rapid urbanization and industrial growth, inadequate food and resource depletion. All these are some of the hindrances that are coming for a climate change. The climate is changing rapidly and this is leading to many severe calamities that we are facing these days. In the technological change is a national necessity in a developing world, must not be frozen. What is needed is the concept of environmental planning and management coupled with the full understanding of the ecological concepts, methods and skills. And since the problem is not only local but global, when we talk of global in its dimensions and consequences, the solution can only be achieved through international cooperation and understanding of ecological concepts, methods, and skills. It is not just one country's problem, rather a global one, and it can only be resolved by cooperation and understanding by the nations which are rich and one who are ready to help the poor ones. Man survives only as long as the earth survives in her present form. If we are changing the earth from a present form, then surely we will face the consequences which we are doing in the present scenario. The man is firmly located as a part of the global ecosystem, which depends on him much as it depends on it, even though the viewpoint of the environment management process is fundamentally that of man, that is the manager, whether he himself or even the rest. The natural environment of man, on the other hand, consists of the air, water, solid, waste, noise, radiation, soil, timber, wildlife, living space, etc., while his man-made environment consists of work environment, housing, technology, aesthetics, transportation, utilities, and settlement, etc. Management of environment can be done at various levels. One, globally it can be done. Secondly, each country does it on its own. Third, industry level initiatives can be taken where the person himself thinks about it.
And second, the individual level that depends on people like you and me. When we talk of global initiatives, there are certain and several summits being organized all over the world, which tell us that yes, we are considerate and we are considering nature to be a vital part of our existence, as without it, we cannot live in any form. United Nations Environmental Programme, UNEP, is one of those initiatives done at a global level. In it, the main core functions for which it works are setting goal agendas for protecting environment, facilitating joined up thinking. Then third one is endorsing common principles where each country will have its own set of criteria or objectives to finish it off. Providing global leadership, building institutional capacities where each institution will be doing the things which are as per the environment friendliness, legitimizing global governance through industry. We need to legalize all the laws, as sir told us earlier, that India has several laws which are there to protect the environment and the pollution, etc., which are a threat from the man himself to the nature. So to control us, we are only making laws about it. Second, Earth Summit. The Earth Summit 2020, which was held in Rio, group of 20 countries is there, which are coming together to reconcile world economic development with the protection of the environment. Now, these all are things that are talking about the global environment and global countries, global initiatives taken by us. But when we talk about our country, what India is doing to manage its environment. Environment management in India is rapidly emerging as the next major development and the policy challenge for the country. And it will be the center of the 12th five-year plan, which is under preparation. The challenge is to control pollution. The highly polluting industries being invested in manufacturing sector that are on Central Pollution Control Board's red list has fueled this growth. India is highly vulnerable to climate change due to a combination of high level of poverty, population density, high reliance on natural resources, and environment already under stress, that is water resource problems, reflecting the size of its economy and population. India is ranked 6th amongst largest emitter of greenhouse emissions that are among the lowest in the world. The National Environment Policy, NEP, recognizes the value of harnessing market forces and incentives as part of the regulatory toolkit. Individual level environment management, which can be done by us at home. We should not buy single-use plastics. We should pop a flask or reusable bottle in our bag next time we go out. This is itself can stop a number of landfills and oceans from these plastic bottles. Secondly, shop locally, shop organically. Try to produce vegetables, fruits at home as possible. It will help reduce carbon footprint and support nature. Next, reuse and recycle. Reusing items saves the natural resources and energy needed to manufacture new ones. Make organic composite. Our own houses can give us the manure that we require in our plants and fields. We just need to dig deep and use the bit. We should plant trees, gift trees. Importance of oxygen is well understood by us in today's time, and to protect the future, we ought to toil in the present. एक श्लोक मत्स्य पुराण से, दश कूप समवापि दश वापि समोहद दश रदसमः पुत्रो दश पुत्रो समुद्रमा। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। एक पौधा जरूर लगाएं और वो पेड़ बने तब उस तक उसकी देखभाल अवश्य करें। ऑक्सीजन सिलेंडर से जिंदगी नहीं चलेगी हमारी, ये हमें आज समझ आ गया है। मौतों का मंजर तो सबने देखा और सुना है। पर्यावरण संरक्षण करें, पीढ़ियां सुरक्षित करें।
Excuse पृथ्वी me, ma'am. पृथ्वी पू च उर्वी, yes. Hello. Ma'am, time is over. Just a minute. I'll just finish it off. Wrap it very soon. In a moment. पृथ्वी पूछ उर्वी भव, समग्र पृथ्वी संपूर्ण परिवेश, परिशुद्ध रहे, नदी पर्वत वन उपवन सब स्वच्छ रहे, गांव नगर सबको विस्तृत और उत्तम परिसर प्राप्त हो, तभी जीवन का सम्यक विकास होगा। हमारे पूर्वज पर्यावरण का महत्व आज की औद्योगिक पीढ़ी से अधिक मानते थे। इसके अनेक उदाहरण हमें मिल जाएंगे। पहला, अमृता देवी जी ने पेड़ों की रक्षा हेतु अपने साथियों के साथ मिलकर 363 लोगों ने शहादत दी, अपनी जान न्यौछावर कर दी। यह विश्व का एकमात्र ऐसी घटना है जहां पेड़ों हेतु इतनी बड़ी संख्या में अपनी जान का बलिदान किया गया। इस घटना 1787 की इस घटना में विश्नोई लोगों द्वारा अपने धर्म की रक्षा बलिदान देने की घटना को सुनकर जोधपुर महाराजा को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। इस घटना से प्रभावित होकर श्री गोकुल जी ने प्रशंसा में यह शब्द कहे थे, कुरंग पोमी परंग मेथी धर्म सु कुरग धीज वन राशिया विश्नोइया राठौड़ारी रीज। यानी कि यहाँ पर जो राजा था उसे भी विश्नोई धर्म के आगे झुकना पड़ा, जो कि अपने धर्म की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए तत्पर थे। दूसरा, आज की पीढ़ी ओरण अथवा देवन के विषय से अनभिज्ञ है। यह एक ऐसी परंपरा थी जो पूर्वजों की, जहां हर गांव में एक ओरण यानी भगवान की जमीन आरक्षित की जाती थी, जहां पेड़ काटना तो दूर, टूटी टहनी उठाना तक पाप माना जाता था, निषिद्ध था। मारवाड़ की तरह हरियाणा में तीर्थ वन, समाधि वन तथा गुरुद्वारा वन, असम में थान, मिजोरम में माघमुंड, सिक्किम में गुम्पा, तमिलनाडु में कोकिलनाडु, हिमाचल में देववन, महाराष्ट्र में देवराई, अरुणाचल में गुम्पा और उत्तराखंड में देवन आदि अनेक हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे सभी लोग ऑल ओवर दी भारत में इन लोगों ने अपने आप को पर्यावरण की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रखा था। तो आज हमारा फर्ज है, टुडे इट्स आवर ड्यूटी to protect the nature in the fullest form, plant trees, save trees, be plastic free, and that's all that I can say. बहुत बहुत आभार।